बड़ी बहन है माता जी, गुरु बहन है, और थोड़ी सी बड़ी भी है महाराज जी से। तो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक जो परिचय है वो होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। ये हमने देखा कि कैसे महाराज जी उनका इंतजार कर रहे थे, और कैसे माता जी भी यहाँ आने के लिए तत्पर थी, बिना किसी शर्त और बिना किसी उसके उन्होंने आकर, और जैसे हम कुछ भी नहीं कर पाए माता जी के लिए, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है हम उनको किसी तरह से सर्व कर पाए, लेकिन माता जी बहुत खुश हैं यहाँ पर आकर, और सबको ब्लेस कर रही है माता जी, और सारी सेवाएं दे रही है। सॉरी माता जी, मैं आपके परिचय के लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। long as she doesn't tell any lies. Yeah. Tell big stories about me. Namo Krishna Padaya Krishna Padaya Vimapti Bhakti Jaya Pamina
Srila Prabhupada ki jai. I won't do the pronouns because maybe not so much room. Normally, I always do it. Always make pronouns after everything. But anyway. From you. You have made? No. No, from Krishna? From the deities? Yes. Yeah, very nice. Okay. I love the rose. Huh? What should I talk about? Do you want me to talk? Or do you want to just have informal, like ask questions? What is your desire? आप सब लोग क्या चाहते हैं कि माता जी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करें या फिर इसको इनफॉर्मल रखते हुए हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रखें? Daily routine so that we like how to lead a life. All right. Very nice. So many ladies. स्त्री को कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, बेसिक हम लोग भारतीय हैं जो हमारे अंदर श्रद्धा होती है, उसको कैसे आगे के साथ भक्ति A little hard because I drink a lot of water. माता जी की थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, पूरी लाइन खाली. Sometimes. I'll try not to. She's telling me that she wanted You have mouse. Really sorry, Mataji. Mouse. Yes, Mataji wanted to ask that she wanted to know that what are the real ideal duties
for the females. I According told to you she's going to do this. Okay, and you want to tell me? Okay. So, first we understand the ideal duty for a lady. First of all, you are Krishna's devotees. It's first of all, number one, first. And you can hear me? Yeah. Or should I use the mic? Yeah, Ah. this is what you hear. This is Yeah. So number one, you are Krishna's devotee. Number one, right? And how many of you are married? आप में से कितने लोग कितनी माताजी शादीशुदा हैं? 8, 4, 5, 6. Only so little. In Ujjain, most all ladies married. No one lives at the temple or not in the I guess in the ladies' house. So it's amazing to see so many unmarried ladies. Okay, well, the duty of a woman, if she's married, then the most important thing, your husband, the devotee, you're a devotee. If not, doesn't matter. But just to follow Prabhupada's instructions, right? To follow the principles, to rise early, to chant Hare Krishna 16 hours a day, if it's possible. Yeah. And take care of your family. And if you have children, Prabhupada said, don't go to the temple and start doing deity worship, everything like that, and you have children. He said, these are your first responsibility. And it's nice, you have your children, you help them to become Krishna conscious, you send them to the devotee school. You have a devotee school? Oh, yeah. Yes, But we have and only for the boys. Okay. So you just be a good example, because children very much learn by example. Like I'll tell you a little story. translation. Oh, translation. How many can understand English? Oh, beautiful. Most of them actually have recording. They're going live actually. Can't So- say So quite a few can understand English. Yeah. So I don't want to say something bad about my daughter, but she doesn't practice Krishna consciousness so much, right? And so the children, when I'm not there, the children are very naughty. But when grandma's there, and grandma says, okay, 6 o'clock, get up, have a shower, and first thing, have a shower, you get dressed, then you come to the temple ground and you go around Tusi, right? You go around Tusi, Tusi water. And then I give them breakfast, and then after breakfast, clean your teeth, get ready for school, everything ready. And then out the door, yeah? But first, they have Tusi, and you go around Tusi. And I said, this is very important. You be an example. So they know what grandma does. If they get up early, grandma's in the temple, and she's making mungalati. They know that. So if they get up early, my little grandson, he's very naughty, and he will go into the living room and put on the television. And I go, no television. I said, who is this on the television? That's not little Krishna. And they know when grandma takes care, you must have little Krishna on. But most of the days, when I have them in a good routine, because they like to go to the before school care, and they don't watch anything. They just, okay, you must be very regulated with them. Just like, oh, is it Surah?
I'm going to get gardens up here like in Surat. When the birdies went to Surat, the people, they were coming out of the houses and putting the garlands on up to here. And then they take them off later up to here. She needs to translate. Okay. Oh, all right. You transfer. I'll speak loudly. Yeah. So what is one now? So, yeah. So it's like that. You must be yourself an example to your children. If your husband is not a devotee, then you also, he will say, oh, look at my wife. She's such a nice devotee. Maybe I should go with her to that temple. You know? So we're teaching by example. This is the best. And Srila Prabhupada, he taught by example. हमें अपने बच्चों के लिए उदाहरण बन के प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि आपके जब पति देखे तो उन्हें ये लगना चाहिए कि ये जो मेरी पत्नी है ये कितनी अच्छी भक्त है और ये कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही है। और प्रभुपाद हमें उदाहरण की थ्रू ही सिखाते हैं सब कुछ। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? माइक का थोड़ा इशू है। At home? आई थिंक चेक करो, आपने ज्वाइन किया था? Oh, there's a problem. Hare Krishna. Yes, Mataji. No, behind. Oh, Prabhuji, what Prabhuji is doing here? It's okay. उनको मंदिर भेज दो। No, it's okay. Is it okay? If he wants to stay, he can stay. We're not going to Okay, so Mataji is asking the question, what is that? That the best that you was very good. जो बता दिया And मुंडे ने that mostly so I get up every day at 2 o'clock. And I go to I go to normally and I go to 6 hours. जी बताइए, वो 6 घंटे की नींद लेते हैं और इसके लिए वो 8 या 9 बजे ट्राई करते हैं कि वो सो जाएं और सुबह तब जाके वो सुबह 2 बजे उठ पाते हैं, क्योंकि अगर वो रात में 10-11 बजे सोएंगे और सुबह 2 बजे उठ जाएंगे तो उनकी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ेगा और वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। तो माताजी बता रहे हैं कि आइडियली हमें जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम सुबह समय पर जल्दी उठ पाए। And I'm not always, I'm traveling a fair bit, but once I get उसके साथ में वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब वो कहीं लंबे समय के लिए और वो अपने आप को सेटल कर लेते हैं, वो अपना जो उनका पर्टिकुलर रूटीन पे उठना और एक समय पे सोना पूरा प्रयास करते हैं फॉलो कर सकें। I chant until, you know, I might chant until 4:10, and I have a few rounds done, and then I go out. 14 राउंड सुबह मंगल आरती होने से पहले ही कर लेते हैं और तो मंगल आरती के लिए जाते हैं। I've been training. And then I come back because I do have to go. So I have to.
and then I check the rest. No, okay. Entire mantra, and then also a little bit. This morning we read very nice. Untold stories from the माताजी महाराज जब वापस आते हैं और तो उसके बाद वो अपने बचे हुए जितने भी उनके राउंड्स हैं उनको राउंड्स को कंप्लीट करते हैं और अपनी गाड़ी कंप्लीट करते हैं। और आज माताजी ने सुबह बहुत सुंदर कथा पढ़ी, अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम रामायण। And it's nice when you're doing it's very nice to do it together with someone, you know. Because when you're because you're like that. But if someone's there and they're like, सही नहीं है। when you're reading, इतना you होने have तो to read with एक someone. सही कहाँ से? If it's a really story, the girls get excited and they make little noises and it keeps you alert. But when you are sitting by yourself and reading, sometimes कई बार जब हम रीड करते हैं तो हमें किसी के साथ रीड करना चाहिए, क्योंकि जब हम कथा सुनाते हैं तो जो साथ में हमारे होता है वो उत्साह मिलता है कथा सुन के। अदरवाइज अगर हम अकेले कर रहे होते हैं रीडिंग तो हो सकता है कि हम सो जाएं। and then we after that we go. It's so. I have some fruit at 6 o'clock. In a Jane, the program starts at 7:30, depending on where I am. Here, 6:15. There, 7, because the program starts at 7:30. थोड़ा कुछ फल या फिर आहार लेते हैं हल्का फुल्का। जैसे उज्जैन में माता जी ने बताया कि 7:15 पर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है या 7:15 7:30 के आसपास, तो उससे पहले माता जी प्रयास करते हैं कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ आहार ले लें। So when I'm at the temple, I don't have to worry about the children. ऐसी फीमेल के लिए I can go at 7 o'clock. The program starts here. We are there on time. क्लास And the program is, reading and probably take Prabhupada for a walk around the temple 3 times, around the altar. And then after that, we have Guru Puja. And then after Guru Puja, I give a class every day. मंगल आरती के पहले पूरी 16 राउंड्स करते टेम्पल में होता है तो माता जी याद रखते हैं कि अपना जब टेम्पल में आता है प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले माता जी राउंड्स वगैरह या फिर वॉक करते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद माता जी मॉर्निंग अपना क्लास देते हैं। And then at 9 o'clock we have prasadam. And then after that maybe more 10 o'clock, depending on the day, come back here. What things to be done, I do. Try to read some more. And some possible thinking or some text message. Do it. Then 1 o'clock we have the girls cook nice prasadam. Yeah. I like to have activities. Like yesterday at 10:30 we had Harinam. Yeah. Like something going on all the time. Yeah. 9 बजे के आसपास प्रसाद लेकर माता जी वापस आ जाते हैं और माता जी 10 बजे के आसपास रीड करना या फिर कोई उनकी एक्टिविटी है वो करने का प्रयास करते हैं। कई बार उनको जो भक्त है वो कुछ लिखते हैं, कोई मैसेज करता है या कोई प्रश्न करता है तो माता जी उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और 1 बजे के आसपास माता जी अपना लंच ले लेते हैं। और माता जी बहुत अच्छा
प्रसाद बनाते हैं, जैसा कि माता जी ने बताया अभी। ओ हरी बोल, सारा ग्रुप बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं। And then in the afternoon, I have a rest. Yesterday, Mataji gave me a nice massage on my feet. And I fall asleep now. She's giving me a massage and I fell asleep. And all of a sudden I wake up and she's still giving me a massage. So she's very good. And then, get ready. And I love to talk to people. In my chat, it said, this lady will get a plane, a bus, a tram. She'll sit next to someone. By the end, they are friends. I like people. My godbrother and my Swami. One time they said to me, the temple president and the new governor, said, Surabhi, how would you like to be the pujari? And Ramai Swami said, no, Surabhi is a people person. I was happy he said that. I like people. I mean, lots of things. 1:30 बजे के आसपास माता जी रेस्ट लेते हैं, और माता जी जैसा बता रहे हैं कि माता जी ने उनको बहुत अच्छा मसाज दिया कल, और उससे माता जी को नींद आई बहुत अच्छी। और माता जी ये कह रहे हैं कि उनको लोगों से बात करना बहुत पसंद है। अगर वो कहीं जाते हैं, ऐसा कहते हैं उनके तो उनके गुरु भाई गुरु बहन है, वो ये कहा करते हैं कि माता जी अगर कहीं जाते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, किसी भी जगह हो, वो जिसके भी साथ बैठे होते हैं, वो जर्नी के बाद वो उनका मित्र बन जाता है। तो माता जी भी बता रहे हैं कि उनसे एक बार उनके किसी गुरु भाई ने कहा था कि माता जी क्या पूजा करना चाहेंगे, पुजारी की भूमिका निभाना चाहेंगे मंदिर में। तो उनके अन्य गुरु भाई ने ये कहा कि माता जी को लोगों से बात करना ज्यादा पसंद है, तो वो उससे ज्यादा उन्हें रुचि आएगी, ताकि जहाँ पे वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। Okay, are you all able to hear? Okay. Yeah, so and then this is here. Every place is different. Here, Prabhu, he's very good with the names. Inujang, ladies, no class. I give two ladies talks while I'm there. I miss to read the kirtan. So, yesterday I said to I said, can we go on Harina? And he said, okay, I'm fine now. So we went at 10:30, just around. Yeah, it was very nice. The little boys, they like my kirtan. माता जी बता रहे हैं कि उन्हें कीर्तन गीत करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे उज्जैन, यहाँ अपना इंदौर का टेम्पल जो है, यहाँ पर माता जी कीर्तन करते हैं और क्लासेस भी होते हैं। हर मंदिर का अलग अलग अपना प्रेजेंट करने का तरीका है। तो माता जी बता रहे कल वो 10:30 के आसपास गुरुकुल के बॉयज के साथ और अक्षर गोपाल प्रभु जी के साथ कीर्तन के लिए गए थे नगर के लिए गए थे। और गुरुकुल के जो बच्चे हैं उन्हें माता जी के द्वारा किया हुआ कीर्तन बहुत। And in the evening, we go and we talk to people, talk to guests, and then at Arati we have Arati, and after Arati again they ask me to speak. So I'm giving 2 talks a day here. Yeah, but that's not always possible. Yeah, very special. So many lovely ladies and young ladies. Yeah, very nice. उसके बाद माता जी यहाँ पर मंदिर में गेस्ट जो आए थे उनसे मिले, और उसके बाद आरती हुई, और आरती के बाद माता जी ने फिर से एक क्लास दिया। माता जी बता रहे हैं कि यहाँ इंदौर टेम्पल में आने के बाद माता जी को दिन में कम से कम 2 बार तो क्लासेस देना ही पड़ता है। और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत सारे माता जी हैं और माता जी बहुत इंटरेस्टेड है माता जी को सुनने के लिए, तो माता जी बहुत अच्छा लगता है। I try to give my hot milk before 8 o'clock.
If it's possible, I can go to sleep at 8 o'clock. I'm very happy. माताजी 8 बजे के पहले कोशिश करते हैं कि वो गर्म दूध ले लें, और अगर उन्हें समय पर सोने मिल जाता है क्योंकि उनका रूटीन है 8 बजे के आसपास, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उन्हें लगता है कि उनका रूटीन बहुत सही चल रहा है। I think how I started to do that was when I went to the Mayapur festival many years ago. I went every year for 13 years, and then the pandemic came. Yeah. तो माताजी को ऐसा याद आता है कि ये जो रूटीन है उनका, ये मायापुर जाने के बाद से शुरू हुआ, और माताजी 13 साल तक लगातार मायापुर दर्शन करने के लिए जाते रहते थे। और उसके बाद पेंडेमिक जैसे कि कोरोना, वो समय आया। So you go to the program. I get up early anyway, and I chanted some rounds, and then you go to the program, and after Mangalati they have announcements. तो माताजी प्रोग्राम में जाते हैं जब, तो माताजी बता रहे हैं कि जब प्रोग्राम में जाते हैं और मंगल आरती होती है, उसके बाद जो आगे का जो दिनचर्या होता है उसकी अनाउंसमेंट की जाती है वहाँ। The announcements will go to 6. कई बार अनाउंसमेंट इतनी ज्यादा होती है कि 6:15 हो जाता है। And the next program is at 6:45. Yeah. उसके बाद वाला जो प्रोग्राम होता है वो 7 बजे के बाद पहुंच जाता है, क्योंकि जो नर्सिंग आरती है वो जो मंगल आरती के तुरंत बाद होनी चाहिए, अनाउंसमेंट की वजह से वो एक्सटेंड होकर 7 बजे तक पहुंच जाता है। And then they say time for paragraph. उसके बाद वो कहते हैं कि अब परिक्रमा का समय हो गया है। Oh, this is not good. माताजी कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है ये इस तरीके से एक्सटेंड करना। So then I decide I'm going to get up at 2 o'clock, and I will be in the temple by 3 o'clock. तो माताजी ने फिर डिसाइड किया कि वो 2 बजे जाग जाएंगे और 3 बजे तक वो मंदिर में उपस्थित होंगे। And then I will get my rounds done. और उसके बाद वो माताजी अपने जो उनके राउंड्स हैं वो अपनी माला कंप्लीट करें। Only a few of driving in the car or the bus. थोड़े बहुत बचेंगे जो माताजी बाद में कर सकते हैं, ड्राइव करते हुए या कार में ट्रैवल करते हुए। Because you cannot chant your rounds when you're on the paragraph, and you can't chant your rounds after. क्या साइड से क्योंकि हम अपने राउंड्स हम तो साइड होते हुए करते हुए या परिक्रमा के बाद में नहीं करना चाहिए। So that's how come I started getting up early. इसी वजह से माताजी जल्दी उठना शुरू कर दिए। Huh? कौन सा बिजनेस है? I only do 60. Sometimes. But most of the time. Prabhupada said, have 16 good rounds. I'm still trying. माताजी कह रही हैं कि प्रभुपाद ने कहा था कि जो 16 माला करते हैं उन्हें वो 16 माला अच्छे से करनी चाहिए। माताजी कह रही हैं कि वो भी प्रयास कर रही हैं। Any more questions? Yeah. What's it look loud? You have like come across many things. We come across many things. How do we differentiate? It's not a travel manner, it's a restaurant. So how do we think that? Yeah. What's Maya? What's Yes, Mataji. You have to chant good rounds, you make a routine, you're fully engaged. There's not much room for Maya. If you structure your day, then there's not much room for Maya. You try and always praying in the Shingaday, please in Shingaday. Please, we will always protect you. You know? Like that. And then you make the right choices. You know, you read. Reading's good. Sometimes if you're in a dilemma about what to do, what not to do, you pick up one of Prabhupada's books,
You open a page, you see it. There's an answer there. Yeah. Wow, we're getting crowded. You can live up a little bit. Live up a little bit. You think I got 40 already? I think so. On purpose. I didn't expect so much. Is that that's it? Yeah. How do you travel? How do you travel? I think it's easy on the train. Because you get on sometimes in the afternoon, get on the then you just put your things there, pull out your blanket and go to sleep. And yet you get up, everyone else is sleeping. And you sit there and you just can't. Huh? You just have to be careful that you don't get influenced by everyone sleeping and you sleep too. Everyone just says, why should I get up? Yeah. But I also travel on trains, not anymore. I don't think trains are so safe. Yeah. The men in this world, they are rascals. They like to touch the ladies. Yeah. So after that happened to me, then I said, no more trains. Then I go on the planes. Only this trip, I'm going on maybe 1 or 2 trains. I'm going to Ayodhya just overnight. And so maybe I'm going on a train, but I will still wake up early, you know, because the buses, the train, can easily fall asleep. And you have, who are you going to talk to unless you have friends here? But actually, we don't want to get too involved with the non-devotees. Of course, साला वो भी लाइट बंद करेगा तो ये करेगा वो करेगा दिमाग खराब करता है okay, but when it's सब not, बंद कर दे you take overnight trains, then you have your routine, you go to sleep early, right? You can. And it doesn't affect you. If you have, oh, I'm sorry. Everything, you have to have, you must be strict with yourself, okay? तो प्रियंका माता जी ने प्रश्न किया कि कई बार हमारे जीवन में भौतिक परिस्थितियां भी आती हैं और आध्यात्मिक परिस्थितियां भी आती हैं, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें, हम ऐसे पता कैसे लगाएं कि वो भौतिक परिस्थिति है या आध्यात्मिक परिस्थिति है, कि कृष्णा से हमारा आदान प्रदान है वो, या फिर माया हमें फंसाना चाहती है। तो जिसके उत्तर में माता जी ने कहा कि हमें अपना एक सर्टेन रूटीन रखना चाहिए और जो हमारी डेली प्रैक्टिसेस हैं वो हमें अपनी समय पर करनी चाहिए और हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हम जितनी ज्यादा कर सके हम उतनी प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रियंका माता जी ने उसके बाद प्रश्न किया कि माता जी जब इतना ट्रेवल करते हैं और कई बार हम भी ट्रेवल करते हैं, तो उस समय पर हमारा जो रूटीन है हम उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। माता जी बताते हैं कि जब ट्रेन में या फिर हम किसी बस में सफर कर रहे होते हैं, हमारे लिए आसान होता है कि हम अपना जो राउंड है, हमारी जो साधना है उसे कंप्लीट कर सके। और माता जी ने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ट्रेन उतनी सेफ नहीं है, तो अगर हम रात के समय ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपना अपना जो रूटीन है उसे समय पर पूर्ण करें और जो नॉन डिवोटीज हैं उनके साथ ज्यादा एसोसिएट ना करें। I always make my priority my chanting. I couldn't imagine not getting up early in the morning, having a shower, getting ready, and not taking my big bag. First thing. Yeah, nothing more is important as to chant. I have 5 children. I have 5 children, right? And 8 grandchildren, right? When I was bringing up my children, I never let that become difficult. I every day went to Mangalam. I have a routine with the children. I get them to sleep every night, 7 o'clock, right? And then when they were in the Gurukul, for some time,
on the farm where we lived. They had Gurukul for some time. But then the ashram, but then they closed the ashram. All right. And so I would put them to sleep 6:30 and get them up 6:30. And I would get up early. I would go to the chapel, chant some rounds before Mangalati. After Mangalati, I chant until 6:30, 25 past 6. 5 minutes to walk to the house. When it's 6:30, okay, everyone get up. One in the shower, 4 minutes in the shower, no one. And then have them all ready by 7. Then we walk to the temple. Program starts at 7 again. And after the program, they all go to sleep. Yeah. माता जी बता रहे हैं कि हमें अपनी साधना को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, सबसे ऊपर हमें अपनी साधना रखनी चाहिए। और जैसा कि माता जी ने बताया कि उनके 5 बच्चे हैं और 8 पोते पोतियां हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उससे अपनी साधना और अपने जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें बाधा नहीं आने दिया उसकी की वजह से। माता जी बता रहे हैं कि वो अपने बच्चों को जब वो गुरुकुल में थे, माता जी जहाँ फार्म पर रहते थे वहां गुरुकुल था और गुरुकुल में उनके बच्चे रहा पढ़ते थे, तो माता जी उन्हें 6:30 बजे शाम को सुला दिया करते थे और सुबह 6:30 बजे जगाया करते थे। और माता जी सुबह से अपनी साधना, जो उनका मंगल आरती के बाद सारा रूटीन है, उसको कंप्लीट करते हुए 6:25 पर वापस लौट के आते थे और 6:30 पे जैसे ही वो लौट के आते थे उसके बाद वो अपने बच्चों को जगाया करते थे और बाकी के मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए उन्हें अपने साथ ले जाया। And children, they love routine, don't they? Is that true? Who has children? Yeah, they love routine, is it? And you are their routine. You have to set the example for the routine, right? I think my son, for many years, when he got older, he go to bed late, but he'd always get up at 6 o'clock. And I say, do you have enough sleep? And he said, yes, 6 hours. He learned that at the Gurukul, right? So even when he got older, he would sleep 6 hours, you know? Because no matter what they do, they remember that routine that you've given them. And that's the way, for me, it was easy to bring up a family. माता जी बता रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें भी रूटीन पसंद होता है। अगर चीजें तरीके से हो रही होती है तो बच्चे भी उनमें रुचि लेते हैं। जैसे कि माता जी बता रहे हैं कि हम जो माता पिता होते हैं वो जिस रूटीन को फॉलो करते हैं, बच्चे भी उसी रूटीन को फॉलो करना पसंद करते हैं। माता जी ने बताया कि उनके जो बेटे हैं वो बचपन में गुरुकुल में 6 घंटे की नींद दिया करते थे और अब उनकी आयु जैसे कि ज्यादा हो चुकी है के बाद भी वो जो बचपन का रूटीन है उसके कारण वो आज भी 6 घंटे की नींद ही लेते हैं। Prabhupada, he said, rise early before 4 a.m. and attend the whole morning program, and your whole day will be auspicious. Now, I know it's not always practical. Some of you are living far. Some of you are have to take the children to school, and some of you are working. I know it's not so easy. I lived on a big farm, 880-acre farm, and I lived there for 14 years. And during that time, my children were small and growing up. So it was easier. If I had a job and go to work, a little bit more difficult, you know. So you're trying to, but if you can just go to sleep early. There's an old saying, early to bed, early to rise, makes you healthy, wealthy, and wise. Okay? Yeah. प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए और मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए। इससे हमारा जो जीवन है वो सौभाग्यपूर्ण होगा। माता जी ये भी कह रहे हैं साथ में कि ये सबके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो समय पर मंगल आरती के लिए पहुंच सके, क्योंकि हर कोई मंदिर के आसपास नहीं रहता और
माताजी को और भी ड्यूटीज होती है, जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना या घर की अन्य जिम्मेदारियां निभाना। तो माताजी बता रहे हैं कि जब माताजी फार्म पर रहा करते थे, वो बहुत बड़ा फार्म था, और वहां पर रहते हुए उनके लिए आसान था कि वो अपना मॉर्निंग प्रोग्राम, अपनी साधना समय पर पूर्ण कर सके। अगर वो वहां नहीं रह रहे होते तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता ऐसा करना। लेकिन माता जी इस बात को इम्फेसाइज करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम समय पर सोते हैं तो उसके बाद हमारा जो बाकी का दिन है वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि माता जी ने एक उदाहरण भी दिया। एक पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि जो समय पर सोता है और समय पर जागता है, वो उसका जीवन उज्जवल होता है। उज्जवल होता है उसका जीवन। Those who are making hard and uncomfortable exercise, what alternative, like what Well, Prabhupada knew that. He knew that even when he built his temples, not everyone can come every day, right? In the early years, we were all unmarried, so enthusiastic, every day out on Harinam, every day except Sunday, like this sunny days. And after some time, he realized a lot of the householders, they lived outside the temple. So he said, you go into a temple. And he said, we can have hundreds and thousands of temples, all temples, all over the world. But you have to take it seriously. Take it seriously. I have the temple in the home. It's so easy when you're in the home. Oh, the love. Don't do that. Really must get serious. That this is going to take me back home at the end of my life, right? So follow them. Get up early. Do the Mangalati. Chant around. If you need to start early with your job or the children, then try to go to bed early and get up early, and even before Mangalati chant. You know, everyone can do it. No excuses. माता जी ने प्रश्न किया कि कई लोग मंदिर से दूर रहते हैं, उनके लिए आना पॉसिबल, रेगुलरली मंदिर में दर्शन करना उनके लिए संभव नहीं होता। इसके उत्तर में माता जी ने कहा कि प्रभुपाद कहा करते थे, प्रभुपाद पहले से ही जानते थे कि ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है माता जी के लिए। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि आपको अपने घर में मंदिर बना लेना चाहिए। एक तरीके से सिर्फ डीटी का होना नहीं, जो प्रॉपर जो हमें बताया गया है, जो प्रोसेस प्रभुपाद ने बताई है, उसको फॉलो करते हुए अगर हम घर पे फॉलो करते हैं तो हर घर में एक मंदिर होगा, और इस तरीके से हमारे पास सौ कई हजार मंदिर होंगे, प्रभुपाद कहा करते थे। और माता जी ये भी बता रहे हैं कि अगर हमें कभी डिफिकल्टी आती है अपने पारिवारिक जीवन में, तो सबसे पहली जो चीज हम सुधार सकते हैं वो ये है कि हम समय पर सोए और समय पर जागे, और अपने जो राउंड है, अपनी साधना है, वो मंगल आरती के पहले पूर्ण करने का हमेशा प्रयास करें। I don't live at the temple. I live with my daughter and my grandchildren. And but also I would I was not getting up so early. For some time I got a little sick, and I would only maybe 5 rounds before Mogalati night. And then one day I was doing the Mogalati and I heard a noise. I turned around and my grandson was sitting there. Oh, I went, oh no. There goes my chanting. माता जी बता रहे हैं कि वो मंदिर में नहीं रहते, वो अपनी बेटी और उनके पोते पोतियों के साथ रहा करते हैं। और अभी माता जी का, जब माता जी बता रहे हैं कि बीच में उनका स्वास्थ्य उतना सही नहीं था, तो मंगल आरती से पहले अपने राउंड कंप्लीट नहीं कर पाते थे, और वो 5 या 6 के आसपास ही राउंड किया करते थे। माता जी बता रहे हैं कि एक बार जब वो मंगल आरती के लिए उठे, राउंड्स करने के बाद जब वो मंगल आरती कर रहे थे और उन्होंने सडनली आवाज सुनी, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनकी बेटी का छोटा बच्चा बैठा हुआ था वहां पर, उनका पोता। और माता जी को उस दिन लगा कि शायद वो अपने राउंड्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। And my daughter said, sometimes, can you take them to school? But she starts work at 7.
Yeah. And so she's a nurse, right? They have a strong routine as a nursing. And so I said, okay. And so I make a time, I'm going to wake them up, right? But when he did that, I said, oh, you've got to get up earlier. So then I started again with the 2 o'clock, you know? Yeah. And then everything fits in nicely. माता जी की बेटी ने उनसे एक बार कहा कि क्या आप उनके बेटे को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं क्या, क्योंकि माता जी की जो डॉटर है वो वर्किंग है। और माता जी ने जब ये देखा कि उनका पोता जल्दी जाग गया, माता जी ने सोचा कि इस तरह से वो अपने जो समय पे साधना है वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें वापस जल्दी जाग जाना चाहिए, और वो फिर से अपने 2 बजे वाले रूटीन पर वापस आ गए। Oh, they're all young girls. So where do you live? The young girls, where do you live? At home with mother, father, or with other devotees? How many live at home? Oh, many, many, many. Okay. And your parents, they are devotees? No? But they don't mind? They don't mind you being devotee? Yeah. So, if you cannot make a temple in your home, then maybe you have one shelf or one cupboard, and you set it up in your room, and you have the cupboard where you can close the door in the night, Krishna pray, or I'll make a curtain, like that. माता जी कह रहे हैं कि आप घर पे रहते हैं जो भी लोग, उनके लिए कि वो मंदिर, अगर बड़ा मंदिर नहीं बना सकते, डीटीज नहीं रख सकते, तो वो छोटा सा पिक्चर या फिर एक पर्टिकुलर जगह जो भगवान के लिए ही निश्चित है, वहां पर भगवान को रखकर या कोई पिक्चर रखकर वहां पर अपना पूजा, अपनी साधना कर सकते हैं। और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो जिसको बंद किया जा सके, या तो उसमें दरवाजा हो या फिर उसमें पर्दे हो, ताकि उनको हम बंद कर सके रात्रि के समय जब भगवान शयन करते हैं, उन्हें बंद किया जाए। So, unfortunately, me too sometimes I have to sing softly, because sometimes they sleep in the room next to the temple, and other times they sleep on it. But when they sleep in the room next to the temple, my daughter goes, she's sleeping to it. I can hear that bell. I can hear you singing. So you must adjust to the situation. Okay? माता जी बता रहे हैं कि कई बार उन्हें भी घर पर रहते हुए धीमी आवाज में गाना पड़ता है, क्योंकि उनके जो पोते पोतियां हैं, कई बार वो टेम्पल के, उनके जो मंदिर है उसके बाजू वाले कमरे में, साथ के कमरे में सोते हैं। तो अगर वो दूर सो रहे हैं किसी अन्य कमरे में, तो माता जी के लिए आसान होता है। लेकिन अगर वो साथ वाले कमरे में सो रहे हैं, तो माता जी को धीमा धीमा गाना होता है, क्योंकि उनकी बेटी कई बार कहा करती है कि मुझे आपकी गाना गाने की आवाज आ रही है, मुझे आपकी घंटी बजाने की आवाज आ रही है। तो माता जी ने फिर डिसाइड किया कि उन्हें थोड़ा धीमा गाना होगा, ताकि उनके लिए भी आसान हो, और उनके जो बेटी है और उनके जो पोते पोतियां हैं वो भी आराम से सो सके, उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो। It can be difficult, but don't let it be. You pray to today, Prabhupada, you say, I really want to be a devotee. I really want to have a nice routine, and I want to chant nice songs. Please, can you help me? माता जी कह रहे हैं कि हमें प्रभुपाद से और नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अच्छा भक्त बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एक अच्छा रूटीन हो, और हमें उनसे मदद के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। और माता जी ये भी कह रहे हैं कि ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें इसे मुश्किल नहीं होने देना है। A few years ago, we were having Prabhupada's appearance day, and partly through the kirtan, they said, Surabhi, you sing. And I got very enthusiastic, and I wanted to very jump. Jump, jump, jump. And I jumped. But when I got home in the afternoon after the feast, when I got out of my car, I couldn't walk. I hurt my knee, right? Without knowing, I hurt my knee. And I'm thinking, oh my God, Krishna, is this it? I've hurt my knee,
Am I not going to walk anymore? I'm old now. माता जी बता रहे हैं कि कुछ वर्ष पहले प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस पर उनसे मंदिर में कहा गया कि माता जी क्या आप गाना चाहते हैं। तो माता जी इतने उत्साहित हो गए और उन्होंने जब गाना शुरू किया और वो चाहते थे कि कीर्तन करते हुए जो अन्य भक्त है वहां पर वो भी नृत्य करे कूदे साथ में गाए उनके, और इसी उत्साह उत्साह के साथ माता जी ने भी जंप किया और उसकी वजह से उनके घुटने में चोट आ गई और ये माता जी को रियलाइज नहीं हुआ, पता नहीं लगा, और जब माता जी कार से उतरे तो उन्हें पता लगा कि उनके घुटने में काफी ज्यादा चोट है और उसकी वजह से अब उन्हें थोड़ा चलने में भी डिफिकल्टी आएगी। और माता जी ने ये भी कृष्णा से कहा कि क्या अब ऐसा होने वाला है कि वो आगे चल नहीं पाएंगी और वो उनके लिए अपना अपना जो रूटीन है उसे फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाएगा। So I was on a holiday with my family, and I'm thinking, oh, I love to walk up and down on a walk, I love it when I'm chanting. And they're all sleeping, right? So I went outside and I sit on a chair. और माता जी एक बार अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर गए थे और माता जी को चलते हुए जपा करना बहुत पसंद है। चैंट करते समय माता जी चलना प्रेफर करते हैं। तो जब उनके परिवारजन सब सो रहे थे तो माता जी जाप करने के लिए बाहर चलने के लिए आ गए। And I'm thinking, I can't walk. And a little voice came. He said, get up and walk. माता जी सोच रहे थे कि उनकी चोट की वजह से शायद वो नहीं चल पाएंगे, लेकिन तभी उन अंदर से आवाज आई कि उठो और It was difficult. In the beginning, it was difficult. But I was struggled a little bit. And I went first I went one time around the lake. Oh. Second time, oh, I'm getting better. Third time, getting much better. And within a few weeks, I'm walking normal. माता जी ने उसके बाद चलने का प्रयास किया और उनको शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आई। पहला राउंड लगाते समय उन्हें थोड़ा मुश्किल महसूस हुआ। उसके बाद दूसरा राउंड लगाते समय माता जी को लगा कि हाँ पहले से थोड़ा बेहतर है, और तीसरा और चौथा राउंड लगाते लगाते माता जी को विश्वास हुआ कि वो आराम से चल सकते हैं, और उसके कुछ समय बाद माता जी पहले की तरह नॉर्मल चलने लगे। It happened 2 times. ऐसा माता जी के साथ 2 बार हो चुका है। This knee problem. उनको ये घुटने की जो समस्या है ये पहले 2 बार हो चुकी है, उसके बाद भी माता जी फिर से नॉर्मल हो जाते And I walking again. Come here. माता जी उसके बाद ये समस्या के बाद भी माता जी स्वस्थ हो जाते हैं और अपनी साधना है वो तरीके से करने लगती I think the worst thing you can do is to give up. Never give up. The health is a problem, but don't give up. Krishna will help. अगर हम कुछ सबसे बुरा कर सकते हैं तो वो ये है कि हम गिव अप कर दे, हम हार मान जाए, और हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गिव अप नहीं करता, जो हार नहीं मानता, कृष्णा उसकी सहायता हमेशा करते हैं। Just like before we became devotees, we were searching. Sometimes we are very sad and we are praying to God. Please God, will you show me what to do? भक्त बनने से पहले जैसे कि हम कुछ ढूंढ रहे थे अपने जीवन में और हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान हमें कृपया बताइए कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। And God, Krishna, He's in our heart. And He sends the devotees, He sends someone to tell us about the devotee. By some reason, we come across the program, we go. So you don't think Krishna can help you, answer your question? Please help me, God. Please help me, Krishna. Huh? He will. He'll help you. माता जी कह रहे हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में है, वो सब जानते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं जो हमें रास्ता दिखा सके। तो हम अगर हमारी परिस्थिति सही नहीं है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या हमें नहीं लगता भगवान हमारी सहायता करेंगे? That's right. A question from down the back.
पीछे से कोई कुछ पीछे से कोई कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी, माताजी। I don't know. You must answer that question. I think the way to do it, practice makes perfect. So it's practice, practice, and never give up. No, never give up. Just keep going. The ladies down the back. माता जी ने प्रश्न किया कि हम अपनी चेतना को शुद्ध हमेशा कैसे। माता जी ने ये कहा कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रभुपाद कहते थे कि अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। So the ladies down the back. पीछे से कोई और कुछ प्रश्न करना चाहता है? Yes. Yes. मैं अपना धर्म का काम कर रही समय पर, लेकिन मेरे साथ समस्या ये तो मैं सुबह जल्दी भी नहीं पाती हूँ, समय पे सो नहीं पाती, तो मैं अपना काम कैसे पूरा करूँ समय रहते नहीं। Mataji said that she felt difficulty in sleeping on time. Okay, so she completed all her work on time, but because of difficulty in sleep, she wasn't able to on time. She has sleeplessness. Kind of. Yes, that's it. You try your best. You try your best. Krishna is in your heart, right? And you pray to him. He will find some time that you can do this. He will help you. Yeah. भगवान, माता जी कह रही है कि भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से हमारी आपको आप वास्तव में करना चाहते हैं कुछ, भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे। Because before we became devotees and we didn't know anything about Krishna, especially in the West, we know nothing about Krishna. And in the early days, in the 70s, there was hardly any devotees, very little temples. And I was very sad. I was in England, and then I went from England to Amsterdam. This was 1971, right? Hardly any time. But I was so sad. And I started praying to God, because I don't know his name is Krishna. So I'm praying to God. I don't know what to do with my life. Sometimes I'm sad, sometimes I'm happy. You know, I feel alone. Even though I went overseas to travel the world, I thought this was the most wonderful thing to do. And I only went to 2 countries, England and Holland. I didn't go anywhere else. By that time, I was already so sad that, yeah, this world. I said, you can travel from this country to that country, but they are all doing the same thing. They are going to work, building a house, you know, all just working to live. And I thought, but in London, it's this type of house. In Holland, it's that type of house. In Germany, it's that type of house. And I thought, oh, not much fun. There must be more to life than this. You know, so I started praying to God, and He brought me to the devotee. So in our whole life, Krishna being in our heart is in the heart of every living entity, right? Especially a human. What is the difference between a human and an animal?
माता जी बता रहे हैं कि भक्त बनने से पहले, कृष्ण भावनामृत में आने से पहले माता जी एक समय निराश महसूस कर रहे थे बहुत ज्यादा। 70 के दशक की बात है, 1971 के आसपास। और माता जी ये सोचते थे कि उन्हें कई अन्य देशों का भ्रमण करना चाहिए, जैसे कि इंग्लैंड और हॉलैंड वो जा चुके थे वो समय। और माता जी ने ये ऑब्जर्व किया कि अन्य अन्य देशों में जाने के बाद भी एक स्थिति जो है वो बिल्कुल समान है। वहां पे रहन सहन का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन लोगों के जीवन में ज्यादा कुछ है नहीं और कुछ कोई उत्साह नहीं है। और माता जी ने उस समय सोचा कि ये जो जीवन है, इसमें इससे ज्यादा भी कुछ जरूर होगा। और वो बहुत निराश थे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उन्हें उस समय नहीं पता था कि भगवान का नाम कृष्णा है, लेकिन फिर भी उन्होंने हृदय से प्रार्थना की और माता जी को भगवान ने माता जी को भक्तों से मिलवाया। Right? Right? Correct. Yeah. So the difference between the animals and the human being, the animals eat, the animals sleep, the animals mate, and the animals defend, yeah. But there's one thing that the animals can't do, that humans can do. And what is that? Question. They can ask questions. Yeah. The humans, they can speak, and they can ask questions. So that's why human life is the highest form of life, right? Because you can get out of this state. Of course, in state, and sometimes animals, because they bark, look, something has happened, and someone has fallen down the mountain, and the animals bark, bark, bark. Yeah. Bark. Why am I a dog? Why sometimes I have something to eat and sometimes I don't? They don't think beyond their tummy and their senses. माता जी बता रहे हैं कि जानवर हो चाहे इंसान हो, सबके अंदर कृष्ण होते हैं। लेकिन जानवर और इंसानों में कुछ सामान्यताएं भी हैं, जैसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये सामान्यताएं हैं, लेकिन उनमें अंतर मात्र एक है कि जो इंसान है वो प्रश्न कर सकते हैं और जो जानवर हैं वो प्रश्न नहीं कर सकते। कई बार हम देखते हैं कि जानवर अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन फिर भी वो ये प्रश्न नहीं कर सकते कि मैं इस स्थिति में क्यों। और कई बार वो ये भी प्रश्न नहीं कर सकते कि कई बार उनके पास खाने के लिए कुछ होता है, कई बार नहीं भी होता। तो ऐसे जो प्रश्न है वो जानवर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। So we can wind up. We can wind up. You want to? Yes. Unfortunately, we're already there. 1.5 hours. Yeah. Almost. Speak loudly. Yeah, mother humans, all kinds of emotions, and we are surrounded by humans also. Yes. So many a times, in this generation, when females are mostly managing the house, but they are working outside also. So they face jealousy, they face competition, they face that other people around them want to suppress them so that they don't blossom or become their best in whatever they are doing. So how to handle that situation? Like, should we take a step back so that other person can be happy and take their place, or should we fight for it and irrespective of what other person is feeling, fight for a stand and let ourselves grow in the variable form? Don't get so caught up in what's going on out there and the people. They are, most of the time, they're not happy. And they see you happy. And they will try to think, oh, but you try to, if you can, try to get to talk to them, be kind. Prabhupada said, feel with kindness. Right? So you be kind and you make some nice prasada. But oh look, I made these cookies. You make something that you know they like. Oh. That they don't eat,
some of them. Maybe they like samosa. Maybe they like sweet. Maybe, hey, what's your favorite food? And they say, oh, I like samosa. Another one will say, I like cookies. And the other one will say, or I like beverage. So we try to give them some prashadam. Because also prashadam provides help. When people do classes and go to different places and do classes, and the people were challenged, and he told the devotees, no more classes, only prashadam and kirtan. And because, especially now, Kali Yuga is getting worse. But you see the people in the temple in the night? They told me some years ago, only 2-3 people were coming to the temple. Now you have so many. And they all dance, you know? And they all have to eat. They just, do like that. Don't try to get into the philosophy so much. Just be their friend, help, give some Right? Don't get too entangled. Try to be friends, but also not people. Yeah. Oh, I'm sorry. I wish we could have questions and answers for a long time, but it's already 12:30 already, right? And okay. Oh, I want to give you something. How many of you are regular devotees? How many of just new ones? You and you? You and you? You and you? And you and you? And you and you? Right? Are you chanting every day? Not every day. Doesn't matter. I have a gift for you. You want to come? All the ones that are new, come to me. Okay. New ones. Which one, Mataji? This one or this one? This one? You can open. Okay.